फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जानकारी मैं आपको दे दूं। 1984 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। माइक्रो एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एकदम सिक्योर्ड लोन लोन देने का कारोबार करती है। मैंने यानी कि जो भी लोन ये देते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। सदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में बड़ी गहरी पकड़ है। और जो इनके ज़्यादातर लोन है वो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की रेंज के, मतलब जो साइज़ है 1 लाख से छोटे नहीं देते और आमतौर पर 10 लाख से बड़े नहीं देते हैं। 311 से ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है कंपनी का। आइए हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट कार्यक्रम में शामिल हो। उससे पहले मैं एक बार जल्दी से आपको है ना आईपीओ की जानकारी दे दूं। 544 रुपये कल का हाई था और 448 रुपये कल का लो था। लिस्टिंग जो हुई थी वो 450 रुपये के आसपास हुई थी। इशू प्राइस थी 474। तो 450 474 प्राइस बैंड था। प्राइस बैंड के ऊपरी हिस्से पर ही इसे प्राइस किया गया था 474 पर। इशू पूरा भर नहीं पाया इफेक्टिवली, 70% ही भरा, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी में 2.25 गुना भरा था। एचएनआई कैटेगरी में 60% ही, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा। और रिटेल ने तो पैसा लगाया नहीं, सिर्फ 11% रिटेल का हिस्सा भरा। तो कुल मिलाकर क्यूआईबी के हिस्से की वजह से इशू पार हो पाया। जो नियम है कि 3 नियम है कि या तो आपके पास एप्लीकेशंस इस क्यूआईबी कैटेगरी पूरी भरनी चाहिए और आपका मिनिमम 1000 एप्लीकेशन आनी चाहिए। और तीसरा है कि जब आपका मार्केट कैप जो भी हो इशू के बाद का, इम्प्लाइड मार्केट कैप, उसका 10% एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन पूरी पूरी करने की वजह करके से 70% इशू भरने के बावजूद इशू पार हो गया। आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में। सीएमडी साहब हैं लक्ष्मीपति दीनदयालन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में कर चुके हैं और फाइनेंस कंपनीज एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के आप मेंबर भी हैं। मिस्टर दीनदयाल सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट many congratulations on your listing yesterday. Only thing I wanted to ask, as your issue could not subscribe fully, it was subscribed only 70%. Why didn't you price at lower band of 450 rupees instead of 474? Any specific reason for that, sir? Uh, Thank you for having me in the show. I think from the IPO pricing perspective, I think we have taken the right advice from the bankers. We have very good bankers who run our IPO. So all our bankers' view was to fix it at 474. I think that's the call what board has taken. What is the logic behind having price band? If your IPO is subscribed only 70%, you can understand people were not ready to apply in IPO. Retail category only 11%, HNI category only 60%. Somehow you manage 70% from QIB. Then I mean, as a gesture, you should have priced it lower, isn't it? See, we have also taken the last few precedents, what has happened in the market. We understand that IPO was not fully subscribed for many reasons. We are trying to explore those reasons and trying to give the clarification to the market. But the precedents what we saw and the advice what we got from the bankers, other two precedents what we were looking when IPO was not fully subscribed, the market positivity is always to go and take the upper brand, and you can't have a differential prices between the anchor and the main book. So these were the reasons, and this was the advice given by our bankers. Hence, we took the right call. Okay, no worries. Uh, just wanted to understand your plans going forward in next 2 3 years. What is the vision of company? How much growth you expect? What kind of financial performance your investors can expect from the company? Yeah, sure. I think that's the important question. See, as you rightly introduced, Five Star is a very niche company which lends to the unlent market of this country. It's close to 2 trillion market opportunity where Five Star is today heading towards. If you see who are the other players who are heading towards this market, it's far and few. It is very less crowded in this segment. Even within the less crowded people, if you compare our profitability and quality of asset, what we are able to bring it on the table for years to come, I think that clearly differentiates between Five Star and the other player. That's point number one. Point number two, since we have an edge of 20 years of experience,
and our execution capability on the quality of asset and the growth, what we have shown pre-COVID, we can easily bring at least 2x of the growth what the market is expecting from the credit side. So future guidance I can't give at today's point of view, but we can expect at least 2 times of the growth what market uh, generally takes from the credit growth of banks and NBFCs. Five Star can be at 2x of that. Oh, wonderful. So you are saying that you would uh, grow almost twice than what probably other big NBFCs or banks might grow, right, sir? Yes, absolutely. Oh, wonderful. So in next 3 years, probably your business could be double, if I'm right. More than that, More than that. yeah. Okay, wonderful. Okay, as of now, your focus and concentration is completely on southern India, right, sir? So any plans you want to expand beyond this geography, and what kind of new branches you plan to open in next maybe 6 months or a year or so? So in pre-COVID, we were opening close to 40, 50 branches. In COVID-1 and COVID-2, the branch expansion was muted. But if you see last 12 months, where the COVIDs are all got settled, we opened close to 60, 70 branches. That gives a very clear confidence from Five Star. How is the demand at the ground level? So our branch opening will be close to 50, 60 branches year on year. Predominantly, it will be in South. Why I'm saying this is we are a South-based NBFC. We have a 20 years of experience in lending to Southern India and was very successful both in quality and profitability. Having said that, we have few branches in non-South. Gradually, we'll be getting our branch presence in non-South area, but not in a hurry. The predominant growth will be coming from southern states like Tamil Nadu, Andhra, Telangana, and Karnataka. Your net interest margin, sir, it's almost 19.2% for 30th June 22, right, sir? This last quarter. Uh, Too good to believe and too high to maintain probably. Do you think in rising interest rate scenario in this environment you will be able to maintain these margins or you can improve further on? What's the outlook, sir? Uh, Let me start with the outlook, then I'll talk about 19%, what you said. Our outlook at a steady state will be around 14 to 15% net interest margin, which will be one of the best in the lending industry. But slightly our NIMs are a little higher. That's a good reason for it. As you rightly said, in this rising rate interest scenario, Five Star is able to get the borrowing cost close to 8.5 to 8.7%. Which is again one of the best borrowing cost a NBFC of this size can be got from the lenders. This is predominantly because of well capitalized. Our profitability is good, our quality of asset is good, and we are able to give at least 2x growth comparing to the other NBFCs. Okay. Fantastic, sir. Before I let you go, one last thing I just want another clarification. As you said that if the anchor book is at a higher price band, you cannot allot them at lower price band or any other price, right? That's the reason it was compulsory for you to price your IPO at higher band of 474. Am I right in understanding, sir? That was not the only reason. As I said, first, bankers' advice. Second, what is the precedence that you see in the market? You can't be a odd person out in the market. Third is, as you rightly said, some investor would have invested in anchor and some would have invested in the main book. So there should not be any differential pricing between these two. So keeping all this in mind. No. Just my question is, if anchors are investing at higher price band, do you have liberty to allot them at lower price band or not? We have the liberty, but the bankers and board took a call to No, that's maintain. fine. That's absolutely fine. That's absolutely fine. As they applied on at higher band, and company has all the rights to allot at higher price band. But as you guys said, sir, I was fan of your company. I recommended your IPO also. After dull listing, your IPO, your stock prices surged also. But I would have appreciated if, as a gesture, you would have priced it right. Your respect would be much, much more about your company, about your business, and about you. But anyway, it's your right, wherever or whatever you want to do, So, whatever price. so, Yeah. so we take your point. Thank you so much, sir. Thank you so much.
thanks for joining in and wish you all the best. I hope the way your company is doing absolutely fantastic business that would translate into excellent performance on your stock price and people will make money. Thank you so much, sir. Thank you. तो ये है 5 स्टार बिजनेस का आई थिंक लीड करना मैनेजर चाहिए ने सही एडवाइस नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्योंकि अगर आईपीओ 70% ही भरता है तो 100% आईपीओ को आपको लोअर प्राइस बैंड पे करना चाहिए, कम से कम वो एज ए गेस्चर करना चाहिए। बिल्कुल। हमने आईपीओ में पैसा लगाने की राय दी थी, बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, आउटलुक जो दिया है दीनदयाल सर ने फैंटास्टिक है। बिल्कुल। तो फंडामेंटल कॉल हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ और ये चीज़ सेबी को भी देखने की जरूरत है बिल्कुल कि फिर तो प्राइस बैंड का कोई मतलब ही नहीं। एग्जैक्टली। अगर जो इशू 70% भरता है उसमें भी हायर बैंड पर ही प्राइस होना है तो फिर प्राइस बैंड की जरूरत क्या है? फिर फिक्स प्राइस आईपीओ लाओ ना, इतनी मेहनत ही क्यों करनी है? एक ही प्राइस में सबको लगाना है। करेक्ट, क्लियर वही बन रहा है। हाँ, ये तो फिर यही कि या तो अगर आईपीओ आपका नहीं भर रहा है तो फिर आप डेट एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा प्राइस बैंड लोअर करेंगे, तो वो मतलब नियम का मजाक उड़ रहा है। ये बहुत क्लियर है। सो आई थिंक अगर वाकई में प्राइस बैंड वाला रूल अप्लाई करना है तो कोई न कोई ऐसी चीज, भले डायरेक्टली हो ना हो, इनडायरेक्टली लीड मैनेजर्स और कंपनी पर ये प्रेशर होना चाहिए कि अगर आपके इन्वेस्टर आपके हायर प्राइस बैंड पर आपको खरीदने को तैयार नहीं है या रेस्पॉन्स ढीला आ रहा है, मैं तो ये कहूँगा अगर कोई आईपीओ 1 या 2 गुना भरता है तब भी प्रमोटर्स और लीड मैनेजर्स को ये सोचना चाहिए। आप सोचिए ऐसे ऐसे लीड मैनेजर्स हैं इस आईपीओ में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइज, कोटक महिंद्रा कैपिटल, न्योमुरा, आप सब समझदार हैं। और अब मैनेजमेंट तो बोल के चले गए हमारे लीड मैनेजर्स ने एडवाइस किया, तो लीड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं फिर लीड मैनेजर्स का काम क्या है? एग्जैक्टली। और एक तो मुझे लगता है कि ये अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीड मैनेजर्स की जो है ना फीस है ना आईपीओ की प्राइस के साथ और रियलाइजेशन मोबिलाइजेशन के साथ जो जुड़ी है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है जी। ये बंद होनी चाहिए। तभी लीड मैनेजर भी सही एडवाइस करेंगे कि क्या प्राइस पर आईपीओ आना है। अगर कोई आईपीओ 15-20% ऊपर लिस्ट नहीं होता है इसका मतलब उस आईपीओ को सही प्राइस नहीं किया गया है। क्योंकि अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं आईपीओ में और लिस्टेड कंपनी के जो स्टॉक्स कई सालों से आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आकर परफॉर्मेंस बताते हैं, उनकी प्राइस में डिफरेंस होना ही चाहिए। बिल्कुल, वो सस्ता मिलना ही चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर एक रिस्क लेकर पैसा लगा रहा है उस कंपनी के बारे में जिसको अभी तक वो अच्छे से नहीं जानता। एग्जैक्टली। और कोई भी इन्वेस्टर 200, 250, 300, 500 बेट का आरएचपी नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लीड मैनेजर्स को कंट्रोल किया जाए, इनकी जो भी फीस है फिक्स होनी चाहिए, कितना मोबिलाइजेशन हो रहा है, किस प्राइस पर हो रहा है, क्या साइज हो रहा है, उसके साथ नहीं हो ताकि ये इस तरह की गलत एडवाइस ना करें। बिल्कुल। और आई एम श्योर अगर 4 लीड मैनेजर मिलकर अगर दीनदयालन सर को बोलेंगे तो क्या वो नीचे प्राइस नहीं करेंगे? करेंगे 100%। प्रमोटर तो पहली बार मार्केट में उतरता है, नेचुरली वो तो दूसरों के कहे अनुसार चलता है, उनको जो एडवाइस करेंगे उनकी सुनेगा। बिल्कुल, राइट। तो उनकी गलती कम है, गलती ज़्यादा लीड मैनेजर्स की है इस मामले में। और ये मैटर होना चाहिए। मैं ब्रजेश को भी कहूँगा कि इनकी लीड मैनेजर्स की जो संस्था है उसमें ये मैटर उठाए और आई एम श्योर सेबी भी इस मामले को देखेगी और एक्शन लेगी, क्योंकि नहीं तो फिर प्राइस बैंड का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप सबको पता है कि ऊपर वाले में ही होना है। बिल्कुल।